हेलो। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम विदाउट एक्सक्यूज़ जो है ना वीडियोस बनाएंगे, और वीडियोस बनाने के लिए देखें कुछ चीज़ों की ना आपको वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि ट्राईपॉड हो गया, एक माइक हो गया और एक जो है ना मोबाइल होल्डर हो गया। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि देखें मोबाइल की स्टेबिलिटी होती है और उसके अलावा जो है ना वॉइस क्वालिटी होती है। तो इक्विपमेंट ज़रूरी होते हैं। इक्विपमेंट तो बहुत किस्म के आते हैं, जो पूरा एक समंदर है। अगर आप चले जाएं तो इसमें आपको तरह तरह की चीज़ें, और फिर उससे एडवांस और कैमरों में भी ना इसी तरह बहुत ज़्यादा आते हैं। कैनन है, सोनी है, फिर उनके बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं, फिर उनके लेंसेज हैं, फिर मिररलेस है, नॉन मिररलेस है। तो इस वक्त मेरे पास जो मोबाइल है इसके अंदर ना टाइम लैप्स है, ना इसके अंदर स्लो मोशन है, वीडियो क्वालिटी भी ठीक है। वीडियो के लिए या फ़ोटोशूट के लिए ना सबसे अहम किरदार अदा करती है ना वो चीज़ होती है लाइट, कि लाइटनिंग कैसी है। अब ना तो मेरे पास रिंग लाइट है और ना मेरे पास जो है ना स्टूडियो लाइट्स है, बट मेरे पास जो लाइट है वो है सुबह के वक्त की लाइट, क्योंकि सुबह के वक्त जो लाइट होती है वो सबसे बेस्ट होती है वीडियो के लिए, फ़ोटोशूट के लिए। जो ज़रा सा वाइट शेड में होता है ना, क्लाउडी सा, जिस तरह के अभी हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त वेदर होता है और ये बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग होती है वीडियो के लिए और फ़ोटोशूट के लिए। तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की, मैंने कहा यार मुझे माइक चाहिए और जो है एक ट्राईपॉड चाहिए और एक मोबाइल होल्डर चाहिए। तो आज उसने मुझे जो है ना कल मैसेज किया रात को कि भाई तुम्हारा जो है ना वो ट्राईपॉड आ गया है, तो आज वो ट्राईपॉड लेकर आएगा मेरे पास। और माइक उसने कहा है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा माइक में, क्योंकि माइक जो है ना मैं चाह रहा था ज़रा एक अच्छी क्वालिटी का मुझे मिल जाए, जिसमें जो है ना वॉइस क्वालिटी अच्छी हो। तो देखो भाई, जब तक आप किसी काम को स्टार्ट नहीं करते ना, आपको पता ही नहीं चलता कि वो काम होता कैसे और उसको करना कैसे है। तो अब मैं बहुत दिनों से जो है वो वीडियोस देख रहा था, ये सोच रहा था मेरे पास ये कैमरा होगा तो मैं ये करूँगा, ये लेंस होगा या ये चीज़ होगी तो फिर मैं वीडियो बनाना शुरू होगा। और इसके अंदर ने ना मेरे पास कैमरा आया, ना लेंस आया, और ना मेरे पास अच्छा मोबाइल आया जो मतलब मैं चाह रहा था। फिर इतना टाइम गुजरने के बाद मैंने सोचा यार जो भी है बस इससे स्टार्ट ले लेते हैं। तो जब तक वो चीज़ें आएंगी तो कुछ ना कुछ मैं सीख ही जाऊँगा। इन सारे एक्सक्यूज़ को हटा के बस हमने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी ट्राईपॉड आ जाएगा तो हम फिर आपको बताएंगे ट्राईपॉड जो है ना वो कैसा है और कौन सा ट्राईपॉड है, और उसके साथ मोबाइल होल्डर कौन सा है, और फिर चेक करेंगे। और आज जो है ना मैंने वीडियो बनाई है वो बैक कैमरे से बनाई है। मैं पहले जितनी शूट कर रहा था वो फ्रंट कैमरे से कर रहा था। तो वेदर कुछ ऐसा है और बारिश भी हल्की हल्की लगी हुई है, और आपका भाई पता है ये पहन के आ गया है वाइट शलवार। अभी अपने काम पे जा रहे हैं और जाते जाते आई थिंक कि जो है ना हमें अपने कपड़े पेंट करवा के जाने पड़ेंगे रास्ते में। तो आप लोग वेदर एंजॉय करें, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लोग भी रास्ते में मुड़ मुड़ के देख रहे हैं बंदा कर क्या रहा है। यार मुझे वो दूसरा माउंट लेना पड़ेगा, जो ये देखो ये पेंट कर गए ना आखिर चचा तुम। जैसा कि हमने आपको कहा था हमारा ट्राईपॉड आ गया है, तो ये है हमारा ट्राईपॉड। अब भाई ट्राईपॉड आया तो एक स्लो मोशन तो बनता है, और इसका क्रेडिट जाता है सारा साकिब डॉन को। साकिब डॉन से तो आप मिल चुके हैं ना हमारी पिछली वीडियो में। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I
Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't Stay dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.